Did you know Marie Curie was the only woman and one among the two of the scientists who have got Nobel Prize in two different fields. She got the first Nobel Prize for her work on radiations in physics in 1903, and she got her second Nobel Prize for her work on radium and polonium in 1911, and it was her work on radium that earned her the element radium in the periodic table. Can you guess the name of the second scientist? Do put in the comment box. Greetings to all in Dr. Abha Chemistry Pathshala. I just finished with my series on nomenclature. Today I'm starting with the series on chapters of NCERT. So I have picked up the most important chapter of NCERT, which is Organic Chemistry, Basic Principle and Technique. This chapter has the maximum weightage of marks as well as importance when it comes to the studies of concept. The whole chapter has got some 25 to 26 subtopics. So what I'm planning to do is to take 1, 2, 3 depending upon the volume of the content in each topic in every class. I'll be taking up 2 topics. I will be just covering the basic introduction, and then after that we'll be talking about the tetravalence of carbon, hybridization of carbon in organic compound, and maybe some question practice on the same topics. So I hope everyone knows why we have the word organic for this branch of chemistry. Why is it known as organic chemistry? You don't have to know the basics of hybridization so as to know the hybridization in organic compounds. It's very simple. In carbon, we can find out the hybridization just by looking at the number of bonds, right? And it's very, very simple. So, and once the hybridization is known, the geometry and the shape is known. Also, in case of organic compound, once the hybridization is known, use the basic characters on the basis of hybridization. Further ado, let's straight dive into the class. इंट्रोडक्शन में क्या करना है, सिर्फ आपको बताना है कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये कहाँ से आई. सो हमारा एक मिथ था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द वर्ड ऑर्गेनिक, तो जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, उनका जो ओरिजिन है वो क्या है, ऑर्गेनिक है. इनका ओरिजिन क्या है, ऑर्गेनिक है. और एक साइंटिस्ट होते थे, देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड बर्जीलियस. साइंटिस्ट थे बर्जीलियस. नाउ व्हाट ही सेड वाज, ही वाज द वन हु स्टार्टेड विद दिस, दैट जितने भी कंपाउंड्स होंगे their formation is governed by a vital force and it's organic in nature. But later this was proved as obsolete. इसको पुराना बोला गया. एंड देन न्यू अप्रोच, ठीक है, न्यू अप्रोच वॉज फाउंडेड बाय अनदर साइंटिस्ट कॉल्ड वोलर. नाउ व्हाट वोलर डिड वॉज, वोलर ने बना के दिखाया. he actually prepared the organic compound, right, organic compound called urea, right, with the help of ammonium cyanate. So he took some ammonium cyanate and उसने इसको heat किया and then he prepared urea. और ये जो यूरिया था, this was an organic compound. ये एक organic compound था. So that myth that organic compound can only be prepared organically, that myth was, now it was proved as obsolete, and the new theories that the organic compound can be prepared artificially also was put forward. Right, so that was all about a general introduction of compounds which are organic in nature. So basically आपको याद है मीथेन होता है. मीथेन को हम क्या कहते हैं, मीथेन को हम बोलते हैं मार्श गैस बोलते थे. मीथेन का नाम याद है, मीथेन द ओल्ड नेम इज मार्श गैस. सो वाई मार्श गैस, बिकॉज ये उस जगह से आती थी वेयर द एरिया यूज्ड टू वेरी स्वम्पी एंड मार्शी. सो फ्रॉम देयर द कार्बन कंपाउंड्स यूज्ड टू बी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मीथेन. तो जो बेस था वो इसका ऑर्गेनिक था. दैट इज हाउ इट गॉट द नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं कार्बन से, right. So organic compound are formed by carbon. So let us, any idea why carbon? Why carbon forms?
So many organic compounds, so many compounds. I'm talking about organic compounds. The first reason is it is tetravalent. It is tetravalent. Carbon के 4 valency होती हैं, right? I hope you know why carbon has 4 valency. Carbon का electronic configuration क्या होता है? Carbon, the atomic number is 6, so the electronic configuration is 1s2, 2s2, p2. So it has 4 valence shell electrons. So it is tetravalent in nature. So first reason is it is tetravalent in nature. Second reason is it undergoes catenation. It undergoes catenation. Catenation से मतलब ये है self linking ability. You have done it in class 10th. Self linking ability. अपने आप से ये जोड़ते हैं. So बड़ा interesting हो जाता है कि कार्बन यहाँ भी अपने आप को कार्बन से कार्बन कैन गेट अटैच्ड हियर, कार्बन कैन गेट अटैच्ड हियर, कार्बन कैन गेट अटैच्ड हियर, फर्दर कार्बन कैन गेट अटैच्ड एंड हियर also कार्बन only can get attached. So or else we can have some of the valency satisfied by hydrogen also to create hydrocarbons. So if I wish, I can fill up the whole screen with the chain of carbon, and then also there will be a possibility that I can add further. तो जितने चाहे उतने आप कार्बन को ऐड करके तरह तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं. 2 कार्बन का कंपाउंड बना सकते हैं. आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर आपका 5 कार्बन का चेन बनाया, यहाँ 2 कार्बन का चेन, तो कैसा भी बन सकता है. वाई? क्योंकि क्यों कैटिनेट करता है? एनी आइडिया वाई कार्बन कैटिनेट्स? कार्बन कैटिनेट्स बिकॉज कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, इट इज़ वेरी स्टेबल. इट इज़ वेरी स्टेबल, हाईली एक्सोथर्मिक. क्यों होता है? छोटा होता है कार्बन का साइज, राइट? सो छोटा होता है कार्बन का साइज, अपने साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन अपने साथ बॉन्ड बनाता है, और ये बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है. सो जिसकी वजह से इट हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ डूइंग कैटिनेशन. बहुत से और एलिमेंट्स हैं जिनके सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं. हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इट डज नॉट कैटिनेट. वाई? Only monovalent. It can only get attached in one direction, right? So I hope that was clear why carbon forms so many organic compounds. We'll be talking little about the shape of carbon compound. See, it's very easy to find out, right? This can be found out with the help of the formation of the compounds. See, basically either it can form a compound which is single bonded throughout all sides. ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, it is all single bonded. Here also just see all carbons are singly bonded. ठीक है, there could be a likelihood, this is one category. एक ऐसा हो सकता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, राइट? Cl बना दिया, H बना दिया, तो एक कैटेगरी आपकी ये हो गई. ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. Carbon can form triple bond also, right? Cyclic भी हो सकता है, right? It can be cyclic also, it can be open also, but basically whatever case we'll be following, जो bond होगा either single bond होगा और double bond होगा और triple bond होगा. Carbon, there is one more possibility. Carbon on both the sides have double bond. This carbon number 1 has both the sides double bond, and then carbon number 2 and carbon number 3, they have got double bond on one side and single bond on the other sides, as is the usual case, right? Now, whenever you will have case like this, always carbon will be tetrahedral. कार्बन क्या होगा? हमेशा tetrahedral होगा. So it will form a tetrahedral. So the structure of the compound is going to tetrahedral. If it is doubly bonded, it is going to be trigonal planar. It is going to be trigonal planar. अभी आपको इसका reason भी बताते हैं, right? And if it is triply bond, so it is going to be linear. It is going to be linear, right? Okay. Now यहाँ पर क्या होगा? ये वाला जो कार्बन है जिसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, ये हो जाएगा आपका लीनियर. ये लीनियर हो जाएगा if it is tetrahedral, or else if it has all single bonded, the hybridization is going to be sp3.
आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ऑल्दो बॉन्डिंग का एक सेपरेट वीडियो होगा, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड हैं और यहाँ पर कितने हिब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड हैं, 4, 1s and 3p. So this is going to be sp3 hybridization and the molecule is going to be tetrahedral. और अगर डबल बॉन्ड है तो it is going to be trigonal planar and the hybridization is going to be sp2. If it is going to be single bonded, it is going to be linear and hybridization going to be sp. और अगर ये दोनों साइड से डबल बॉन्डेड है, अगर ये दोनों साइड से डबली बॉन्डेड है, सो ये sp2 हो जाएंगे, ये sp2 हो जाएगा और बीच वाला sp हो जाएगा, राइट. सो sp2 क्यों होंगे, क्योंकि इनके एक तरफ डबल बॉन्ड है. वन साइड डबल बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, इनका एक अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ओनली वन ऑर्बिटल इज अनहिब्रिडाइज्ड. जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है वो कैसे दिखाई देते हैं, एज अ मल्टीपल बॉन्ड. इस साइड भी कार्बन नंबर 3 का भी वन ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिडाइज्ड. बट इफ यू लुक एट द कार्बन नंबर 1 which is overlapping with carbon number 2 and carbon number 3, इसका it needs to have two orbitals which are unhybridized. It needs to have two orbitals which are unhybridized. Why? Because 2 and 3 have got one each orbital unhybridized. तो unhybridized orbital हमेशा unhybridized orbital से overlap करेगा. So इसका बीच वाले का the first carbon will have one unhybridized orbital which will overlap with carbon number 2, and it will have again one more unhybridized orbital which will overlap with carbon number 3. So it has to have two unhybridized orbital. So only S and P will be involved in sigma bond formation. So hybridization is going to be sp, and rest of the 2p will be involved in pi bond formation, right? Okay, so it is linear. Now single bond carbon sp3, double bond sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp. और परसेंटेज ऑफ s कितना होगा, 3 parts of p and 1 part of s. 3 parts of p and 1 part of s. If you have to draw a circle and you divide it into 4 parts, what it will be? Only 1 part is s, rest all is p. So percentage of s is going to be 25%. In double bond sp2, there is a circle and there are only 3 parts. And one part is your s. So how much is the p? It is going to be 2 by 3, right? So one third of the s character is 1 by 3. So 1 by 3 is going to be approximately 33.3%. And in the third one, if it is sp, so if it is sp, so s character क्या है, ये आपका ये सारा s character है, ठीक है. So 50% s है, 50% p है, एक पोर्शन s का है, एक पोर्शन p का है. So it is going to be 50%. If the s character is more, the s character, more electronegative the carbon will be. More s character, more electronegative carbon will be. इसका हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, इसका हम यूज़ करेंगे अगर आपको जस्ट वेरी सिंपल एग्जाम्पल, इफ आई हैव गिवन यू ईथीन, वी आर कंपेयरिंग इट विथ एसिटिलीन. नाउ दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, इथीन का हाइड्रोजन इज एसिडिक और एसिटिलीन का हाइड्रोजन इज एसिडिक. आप देखो एसिटिलीन में ये कौन सा बॉन्ड है, दिस इज sp एंड दिस इज sp2. सो sp इज मोर एसिडिक. सो sp क्या करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है उनको पुल करेगा. दिस इज गोइंग टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. जब ये पुल करेगा और H+ देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ बेटर एसिड. सो अगर आपको एसिडिटी का कैरेक्टर देखना है, एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन किसका ज़्यादा है, सो सबसे ज़्यादा किसका होगा,
acetylene, followed by ethene, alkane. Rather, let me write down alkyne, followed by alkene, followed by alkane. Homework for you. So what you're supposed to do is you're supposed to find out the hybridization of the underlined species. Okay. Hope you'll do it for the next class. That was all about organic chemistry introduction, tetravalence of carbon and hybridization. Hope you enjoyed the class, although very basic stuff was being taught today. But guys, let me tell you, many a times I've seen we all have very strong inertia to ask something which we feel it's basic, it's elementary. Do your homework, and soon we are going to meet with the next topics in the next class. Till that, keep learning, keep growing. God bless, stay blessed.